Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about Australian literature, MH09 June T questions. Yes, June T questions. सर जून में एग्जाम्स आ चुके हैं एंड वी नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. सर कैसे करने का तरीका क्या होगा, क्या फॉलो होंगे, चीज़ों कैसे क्लियर करना है, एक एक चीज़ को आइडलाइज करना बिगिनिंग से लास्ट तक. एंड वी नीड टू हैव दैट क्वेश्चन जिनको प्रिपेयर करके हम पेपर क्रैक कर ले विद 70+ इजिली. चलो यार सीधा आते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर. आई डोंट रियली वांट टू वेस्ट द टाइम. शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन. व्हाई डोंट यू पोस्ट ऑल दीस क्वेश्चन ऑन योर इंस्टा आईडी सो दैट वी कैन इजीली वॉच ओवर देयर. यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स भी बता दूँ कि किस आंसर में कौन सी चीज़ जरूरी होगी और कौन सा क्वेश्चन कन्फर्म आएगा. हाँ वहाँ आप देख सकते हो डेफिनेटली, लेकिन यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो क्वेश्चंस यहाँ नहीं है वो भी मेंशन होंगे इस वीडियो में. तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट को ऑन टिप करें. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट वन, हाउ डिड कॉलोनियल बैलेट ट्रेडिशन बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्टिंक्ट ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव. सही क्वेश्चन तो मैंने सीरियसली नहीं पढ़ा, मेरे को पता ही नहीं कहाँ से आया क्वेश्चन. हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन आंसर. लुक एट माय नोट्स, यू विल गेट द आंसर. दोज हू डोंट हैव द नोट्स कैन गेट द नोट्स. नोट्स के नंबर नीचे आता है. You can have the notes and start your preparation as soon as possible. The first question, how did the colonial ballad tradition become representative of a distinctive Australian perspectives? Number 2, discuss the themes and trends of early Australian literature. The theme and trends of early Australian literature. Next one, what is the role of history in the study of Australian literature? Role of history. Yes, the role of history in the study of Australian literature. Next one, the outcome of the links between land and history. The outcome of the links between land and history of Australia have not result. I'm repeating the question, guys. The outcome of the links between the land and history of Australia have had results that are political and social culture. Discuss the different aspects of women writing in Australia. ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा. कह रहा है डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन राइटिंग इन ऑस्ट्रेलिया. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. ये क्वेश्चन पेपर में एक नहीं कई बार आया हुआ है. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म विद द रेफरेंस ऑफ एनी टेक्स्ट ऑफ योर कोर्स और चॉइस. आपका है मल्टीकल्चरलिज्म है, डिफाइन करना है. नेक्स्ट वन, भाई ये अगर नहीं आया तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये आना ही आना है. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एबॉरिजिनल. आई रिपीट, एबॉरिजिनल राइटिंग एज पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. सर ये तो मेन स्ट्रीम है, ये द मेन स्ट्रीम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, दैट इज एबॉरिजिनल. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. इन व्हाट वे डज एबॉरिजिनल लाइफ स्टाइल इन ट्यून विद द एनवायरनमेंट. डिस्कस. दोनों क्वेश्चन एक ही थे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी एबॉरिजिनल पे होगा, तो आप सोच सकते 3 क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं तो कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है. The oral traditions of Aboriginal in Australia are a store of information about tradition culture of these people. Discuss. Jump up to the poetry section. Which poems of Kendall appeals to you the most? Now you guys need to read the poetry first. Poetry पढ़ी होगी तो मैं बताऊँ ना कौन सा मुझे सबसे ज़्यादा. So which now the poems of the Cadell appeals to you the most? Give reason. Choice entirely yours. You all have that poetries in your notes. आप उसको रीड करते हो, आपको पता कौन सी पोइट्री आपको सबसे ज़्यादा अपील किया, उसके एनालिसिस लिख सकते हो आप आंसर में. What are the social problems that Cambridge tackles in poetry? अब Cambridge ने social problems को मुझे डी वो बतानी है. Reference to poem with the help of this course. भाई इसमें आर्टिस्ट ही नहीं आती, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं आता. ऐसे ही क्वेश्चन होगा, किसी पोएट की पोएट्री के बेसिस थीम्स पे क्वेश्चन आएगा. What are the distinct features of the 19th century Australian poetry? क्या फीचर्स द 19th century के पोएट्री के, ऑस्ट्रेलियन पोएट्री के, वो डिफाइन करो. नेक्स्ट वन, डिस्कस सेल्सर यूज ऑफ लैंडस्केप रेफरिंग टू एनी फॉर्म ऑफ यू हैव रीच. सो 4 पोएट हो गए वन बाय वन एंड दिस इज लेसर. चलो 5 आता हूँ. क्रिटिकली एनालाइज एडी होप पोएम ऑस्ट्रेलिया.
AD Hope sir dominant है. Critically analyze AD Hope poem Australia and account for the reason for its popularity. Next one. How does contemporary Australian poetry challenge and redefine the concept of Australianers? Yes, Australianers. उनको define किया, कैसे redefine किया वो आपको आना चाहिए. You guys need to know how to write the answer of this one. Next. Les Murray in Australia leading poet. Sir, Les Murray. Les Murray in Australia leading poet discuss his contribution to Australian poetry, illustrating it from the poem you have read. Next one, इवन छोड़ दिया दोबारा रीड करो, पेपर में कंफर्म आएगा. In what way does Rosemary Dawson, seventh poet आ गया. In what way does Rosemary Dawson poem Cockcrow express the feminist viewpoint? Cockcrow, ये poetry भी बनाती, बार बार आती. Express the feminist viewpoint को डिफाइन करते हैं. Next, this is really important. अब पेपर में मुझे आना ही चाहिए, तो ये तो पेपर एक कंफर्म है. Is this night orbit a forward looking or backward looking bomb? Is it a forward looking or backward looking? Now I need to give an answer. Along with that, I need to give the certain text from the poetry. Discuss. अब आते हैं शॉर्ट स्टोरीज पे. तो पोएट्री अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर लेते, कितने 6 या 7 क्वेश्चन बोले, अगर वो आप कर लेते हो तो मोर देन एनफ, पोएट्री तो हो गई, डन. एबॉलॉजिकल का मैंने क्वेश्चन बताया, एक कंफर्म, 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया, 3 हो गए. सो द शॉर्ट स्टोरी ऑफ ड्रॉवर्स वाइफ portrays the hardship of life and bush of Australian from women perspectives. We guys need to clear this. The short story The Drover's Wife portrays the hardship of the life and a bush of Australia from a woman's perspective. Discuss. Explain the dichotomy of the war. Yes, war. Explain the dichotomy of the war goddesses with a reference to the chosen vessel. Chosen vessel. So chosen vessel का क्वेश्चन आना ही आना है 100%. Next one. Discuss the season of the crops. Yes, I repeat, the season of the silence in terms of both theme and style. Next one. How would you compare the fiction of Marcus Clarke and that of Henry Lawson? Marcus Clarke और Henry Lawson के fiction में differentiate करना है. Themes जो भी दोनों ने employed किए हैं उनको mention करना है. What are the main features of Australian short fiction written in 19th century? अब यही क्वेश्चन पोएट्री पे आया था, यही क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी पे आ गया. क्या था, what are the main features of Australian short fiction written in 19th century? Comment on the title of the play Removalist. सर ये 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा Removalist से, and that too of 20 marks. How appropriate is the title of the play The Removalist? How appropriate is the title of the play The Removalist? Justify your answer. What are the major themes of the play The Removalist? Major themes क्या हैं? वो पूरी बताओ. That's really important. Which is your opinion? Write a note on the structure of the novel Remembering Babylon. Babylon तो याद होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में एक नहीं कई बार पूछी गई और कंफर्म है कि आनी है. चूजल वैसे इम्पॉर्टेंट है, रिमूवलिस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे बेबीलोन इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन. How does Remembering Babylon show Mavrov's concerns of the failure of language? The failure of language. Now this is really important. Then next we are having comment on the major themes and concerns. Comment on the major themes and concerns of David Maloff in the novel Remembering Babylon. Remembering Babylon को clear करना है. How is The Removalist to be read as a play about individuals or as a critique of Australian society? As an individual or critique of the society. I repeat, how is The Removalist to be read as a play about individuals or as a critique of Australian society? Next we are having, what do you consider to be the main theme of Remembering Babylon? कौन सी main themes है Babylon की? उसको explain करो यार. Come on to the last 3 or 4 questions. Love and journey are the 2 interweaving themes in wars. देखो Babylon, choose a vessel, and then was. ये कंफर्म है, हमें जो आनी चाहिए. ड्रॉवर वाइफ मैं पहले बता चुका था. कहता है डिस्कस. लव एंड जर्नी आर द इंटरवीनिंग थीम्स इन वॉर्स. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? डिस्कस. डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन वॉर्स.
Next one, the central protagonist of the Patrick White Wars is Australia. Do you agree with this statement? I'm repeating the question. The central protagonist of Patrick White Wars is Australia. Do you agree? Comment. Now, time to discuss the last question. Would it be right to call Wars an emotional complex novel? Yes, it is emotional as well as complex novel. तो आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स बिगिनिंग से लास्ट तक आपको क्लियर होना चाहिए. दिस रियली वर्क्स अ लॉट. मतलब मेरे को आना चाहिए. आई नीड टू नो एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. विश यू ऑल द बेस्ट गाइस.